today is the day of the storm. मैं बाहर बैठकर अपना vlog start कर रही हूँ. I look so bad, but I am really panicking. So basically इन लोगों ने कुछ warnings दे दी थी कि आप अपनी rooftop पूरी खाली कर दें. हमने अपनी rooftop आज चेक कराई, gutter lines साफ़ करा दें. हमने अपनी gutter lines भी साफ़ करा दी हैं ताकि कोई blockage ना हो. एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान भी रख लिया है. और हम लोग सी से थोड़ा दूर है, माँ बाबा भी सी से दूर हैं, जैसे हम लोग हैं पीछे हैं. we're not like sea facing and even my parents are not sea facing. तो उस चीज़ का थोड़ा सा सुकून है. अगर सी व्यू अपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, जैसे हम लोग छोटे होते सी व्यू अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो फिर तो हमें इवैक्यूएट करना पड़ता. और मुझे याद है एक ऐसा टाइम आया था, तब उन्होंने इवैक्यूएशन का बोला नहीं था, लेकिन एक हेड्स अप दिया हुआ था कि शायद हो जाए. तो हमने भी अपने बैग्स पैक किए हुए थे. कई लोग तो सी व्यू छोड़ के चले गए थे, लेकिन हम लोग भी, मामा बताती हैं कि वो पूरी रात जागती रही, टीवी देखती रही. और हमने कमरे के बाहर अपना बैग्स रखे हुए थे कि इवन इफ़ यू हैव टू रश वी जस्ट वेयर आवर बैग्स एंड लीव. एमरे को माई मॉम कीप्स लाफिंग कि मैं एमरे को हर चीज़ में इंक्लूड करती हूँ. तो कल मैंने एमरे को बताया था कि स्टॉर्म आ रहा है, तो एमरे ने अपनी टॉर्च, अपने बिस्किट, पानी, हर चीज़ रखी हुई थी कि इन केस देयर इज़ अ स्टॉर्म, सो देन आई एम प्रिपेयर्ड. अब थंडर, वी डिड हियर थंडरिंग. बहुत अजीब सा मौसम हुआ है. I don't know if I'm excited or scared, but this is how I am, that I'm nervous. थोड़ा सा excitement लगती है, but I'm like shit nervous. And I'm sure no one knows this except for my family. सबका एक एक phobia होता है. मेरा यही phobia है और आज यही हो रहा है. अभी मैंने देखा है Sunday Times पे कि it's approaching. Now I'm really scared. Let's see what happens. I'll take you guys along my day. And I forgot to say hello, assalamu alaikum, or did I don't know. Assalamu alaikum everybody, welcome back to my vlog. Also guys, today एक दफ़े मैं नहा लूँ, तैयार हो जाऊँ, then I will be talking about 5 mistakes that women make while losing weight, because ये मैंने tried and tested वाली चीज़ें हैं, और ये कुछ myths हैं which I will cover up, but after I change my clothes and I start my घर का काम and all of that. I have my coffee ताकि थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, then I'm gonna get to work. I've been so busy, तो जो कपड़े निकालती हूँ जो नहीं समझ आते थे वो यहाँ पे रख रही थी. आज सारे इनको समेट कर हैंग कर दिया. So this is just one section of my cupboard, right? इसमें western कपड़े आते हैं, western short कपड़े, because it's still here. So that's done. शायरी की नहीं. में क्या है, मौसम में क्या हो रहा है? Beach boom boom. Is tufan coming or not? No. Yes. Okay. Guys, हवा बहुत तेज चल रही है. I'm so scared. नहीं, आपका भी तो ऐसे ही है. कोई बात नहीं, हम बाहर से. हाँ? नहीं, तूफान. Tufan, storm is on its way. Yeah. And how is the wind? Is it fast or slow? Fast. What about barish? Is it coming? Is the rain coming? And what about the umbrella? Do you have an umbrella? Oh, I felt a raindrop. Hello. So I am ready for the gym. I had my lunch और मैं gym के लिए ready हूँ. अभी है time, 1 hour है. उससे पहले मैंने सोचा I should get to the point, the topic of today, because every day I won't be going out or doing something. जिन दिनों में मुझे कहीं बाहर जाना होगा, कोई और activity होगी घर के अलावा, वो मैं आपसे नॉर्मल डेली व्लॉग्स में ही शूट करूँगी. लेकिन रोज़ की सेम रूटीन आई एम श्योर आप लोग देख कर थक जाएंगे. वही सफाई करा रही हूँ, वही लॉन्ड्री हो रही है, वही जिम हो रहा है. तो मैंने कहा उन दिनों के लिए हम एक टॉपिक भी डिसाइड करेंगे. ऐसा टॉपिक जो शायद साइंटिफिकली ट्रू ना हो, बट थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड थ्रू व्हाट आई लर्नड ओवर द ईयर्स, मतलब थिंग्स यू नो, और जस्ट ओपन डिस्कशन. अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ रिसर्च करके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू डू दैट. सो टुडेज टॉपिक इज़ 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मेक व्हाइल लूजिंग वेट. मैंने नोट्स भी लिखे थे. लेट मी ओपन माई डायरी. ओके, सो yes, so the 5
common mistakes that a woman makes. So number one, most important, is do not skip your breakfast. I know it sounds so blah कि ये क्या बात हुई, लेकिन जैसे रात को मैंने कल एक्स्ट्रा खा लिया, रात को भी खा लिया, खुरा मेड अ सैंडविच फॉर अस, तो मैंने भी खा लिया, और सुबह जब उठी हूँ सो आई फील लाइक आई एम फुल एंड आई डोंट नीड अ ब्रेकफास्ट. डू नॉट डू दैट. थोड़ा सा भी खाएं, कुछ भी खाएं, डू हैव अ प्लेट एंड अ मील. आई टेल यू वाई. फर्स्टली साइकोलॉजिकली जब आप खाना प्लेट में डाल के बैठ के खाते हैं, आपके ब्रेन को लगेगा कि ओके यू हैड अ गुड मील, सो यू आर फुल. एंड इवन इफ यू आर फुल, थोड़ा सा क्वांटिटी कर लें, एक बॉयल अंडा कर लें. डू नॉट हैव एनी ब्रेड और एनीथिंग, जस्ट हैव अ बॉयल एग एंड टी और whatever that keeps you going. बिकॉज इफ यू डोंट ईट, what happens is एक तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को पता चल जाता है कि खाना नहीं आ रहा. ये एक कॉमन चीज़ है जो हर कोई कहता है, इट्स गॉटन वेरी पॉपुलर. सेकंड चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि ठीक है, मैं कहूँगी कि ओके आई एम सो फुल, आई एम नॉट गोना हैव माई ब्रेकफास्ट एंड आई एम गोना सेव दोज कैलोरीज. व्हाट हैपन्स बाय द टाइम आई रीच लंच इज़ कि मुझे इतनी भूख लग जाती है, और लोगों के साथ ये होता है जब उन्हें भूख लगती है दे ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग. तो इतनी भूख लग जाती है, देन आई डोंट केयर अबाउट डाइट. अगर मैंने हाफ रोटी खानी थी लंच में, आई वुड एंड अप हैविंग लाइक 2 रोटीज़, और फिर साथ में चाय भी, साथ में कुछ ऐसे भी, मतलब क्योंकि इतनी भूख होती है, तब फिर यू डोंट केयर अबाउट फूड. तो इफ़ यू कीप योर बॉडी balanced, if you keep feeding your body with food थोड़े थोड़े बिट्स में, तो ये एकदम से एक हंगर का वो नहीं आ जाता कि oh shit now you just have to eat anything and everything that comes your way. नंबर 1 ये था. नंबर 2 है नंबर 2 है do not miss out on protein. Women do not still eat as much protein as men do. Men I think ज़्यादा अब इस चीज़ में हो गए हैं, अवेयरनेस हो गई है, और मसल्स के शौक में शायद प्रोटीन खाते हैं. तो ये मिथ भी है कि इफ़ यू हैव टू मच प्रोटीन एंड यू वर्क आउट यू गोना गेन मसल. नो, यू विल नॉट गेन मसल. वो एक और कॉन्सेप्ट है कि कौन लोग वर्कआउट करके गेन कर लेते हैं और वो कैसे होता है, दैट आई विल टच अप on some other topic, but do not skip on protein. You have no idea protein कितना helpful है in weight loss. और आप जो carbs खा रहे हैं उसको माइनस करके आप प्रोटीन कर लें. जैसे अभी मैंने खाया कीमा चावल, थोड़े से मैंने चावल लिए because I want to have a balanced lifestyle, but I made sure I have keema. Keema is a really good source of protein. So our eggs, मीट, ये सब खाएं. इससे ये नहीं होगा कि आपके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे. इनफैक्ट आपकी वेट लॉस में अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और आप उस कैलोरी इनटेक में प्रोटीन खा रहे हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू मोर टू लूज वेट. सो डू नॉट स्किप ऑन प्रोटीन एवर. नंबर 3 इज़ ओके, दिस इज़ ऑल्सो एज बेसिक एज इट साउंड्स कि ये भी बहुत ही कॉमन है, बट स्टे हाइड्रेटेड. इतना हाइड्रेटेड रहें. मैं इतना दिन में पानी पीती हूँ. I mean, I'm always having water. Of course, hydration का सबको पता है कि क्या benefits हैं, लेकिन मेरे experience में पानी पीने से मुझे 2 फ़ायदे हुए. एक, you know that sudden craving to have like ठंडी Pepsi or ठंडी Coke, but it turns out that it's not just, it's like, I don't know why, but it's just that you're thirsty. It's not that you're craving a ठंडी Coke. अगर आप ठंडा पानी पी लेंगे उसकी जगह, 50% आपकी हेल्प हो जाएगी. फिर अगर आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखेंगे ना, फिर आपकी वो क्रेविंग नहीं रुकेगी. देन यू वांट टू गो इन द फ्रिज एंड यू वांट टू हैव दैट ठंडी ड्रिंक. बट इफ़ यू कॉन्स्टेंटली कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, तो ये क्रेविंग्स कम होती हैं. शुगर की सडन नीड कम होती है. पानी एकदम से डिहाइड्रेटेड हो तो आपको पानी पीना है, लेकिन पानी पे नहीं दिमाग ज़्यादा कभी ऐसी चीज़ों पे भी चला जाता है, वो कम होता है. सो यू स्टे बैलेंस्ड. नंबर 4 इज़ समथिंग जो बहुत सारे लोग करते हैं. मैंने भी देखा है कि अगर वो वेट लूज़ कर रहे हैं तो वो वेट लूज़ के स्नैक्स में बिस्किट खा लेते हैं, या वो अपना लंच स्किप करके कहते हैं कि हमने चाय और बिस्किट खा लिए. This is the worst thing you can do to your body if you are a woman, especially if you're in your start of 30s, और आप अभी उस स्टेज से जा रहे हैं जब आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो गया है. स्टबर्न फैट जो है वो अब स्टबर्न होके रह गया है. वेट लूज़ करना मुश्किल हो गया है. डू नॉट स्किप अ हेल्दी मील ओवर चाय एंड बिस्किट्स थिंकिंग कि आप इससे वेट कम कर लेंगे. बिल्कुल भी नहीं होता. चीनी, मैदा, इट विल बी द फैट. मतलब बाकी अगर आप कुछ
पराठा खाएंगे, रोटी खाएंगे, उसके कुछ तो फ़ायदे होंगे। आटा है, कौन सा आटा है, कोई हेल्दी आटा है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन बिस्किट के कोई। नंबर 5 कॉमन मिस्टेक जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी डाइट्स पे चले जाते हैं जो एक डाइटिशियन के साथ होती है, एंड देन दे गो फॉर कीटो. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कीटो, कॉल मी ओल्ड फैशन और व्हाटएवर. दिस डाइट डज नॉट मेक सेंस टू मी. इतना बटर घी ये सब खाओ, कार्ब्स नहीं खाओ, डज नॉट मेक सेंस टू मी. और कीटो की बिफोर एंड आफ्टर में जो आफ्टर वाली बॉडी आती है और जो फेस पे नो ग्लो होता है, वो मुझे बहुत बॉदर करता है. सो आई एम नॉट इन फॉर कीटो. आई प्रेफर अ बैलेंस डाइट जिसमें थोड़े कार्ब्स भी हों, बाकी चीज़ें भी हों. हर चीज़ को बिल्कुल कट ऑफ करने से मतलब पूरी ज़िंदगी तो नहीं आप कीटो कर सकते ना. सो यू विल गेन बैक. इट्स जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. Some people will hate me for this, but it is a marketing strategy. Oh, looks cool, आपने एक हफ्ता कीटो खा लिया. Anyway, so yes, the fifth mistake is do not forget to exercise. Everything does not come easy. If you're just trying to cut down on your calories and you're not working out or there's no movement, it's not gonna be the best kind of weight loss journey that you will experience. With workout, your muscles stay intact, your fat turns into muscles, your body shapes better, and there's so many other advantages just generally of working out. If you want to stay fit, if you want to stay healthy, if you want your future to be better, you need to stay active. And workout with a good diet is the best way to lose weight. So if you can't go to a gym, or if you can't hire a trainer, 1 आवर की वॉक पे चले जाएं, घर में ही वॉक कर लें, कैलोरी वो स्टेप्स काउंट करके कुछ कर लें, बट डू स्टे एक्टिव. You know, a lot of people lose weight and then they don't have that glow on their face. That is because they're not working out and they're going for like really hardcore diets. So there's no point of that as well. पहले इतना पैसे देकर कीटो किया, weight lose किया, उसके बाद now you're going to a dermatologist or you're going to someone because you're facing hair loss and you're facing other problems. So do not torture your body like that. A healthy lifestyle involves movement. So don't forget to work out. Lastly, I would just like to say that do not be hard on yourself. A lot of people would message me all the time, why aren't you losing weight, you're always working out. Yes, मेरी calories, मेरी diet इतनी proper नहीं थी. I would eat a lot, लेकिन it is a slow process and trust me, a lifestyle अगर आपने adapt किया तो वो time लगता है. Quick shortcuts बहुत है, लेकिन that is just like a yo-yo diet, राइट, कि वो फिर वापस आ जाएगा. सो क्विक शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, एक अच्छा लाइफस्टाइल ढूंढे जिसमें एक बैलेंस्ड मील हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, कामनेस प्रैक्टिस करें, गुस्सा नहीं आए, बाकी एंग्जाइटीज़ पे काम करें. ऑल ऑफ दिस टेक्स टाइम. सो बी पेशेंट, डू नॉट टॉर्चर योरसेल्फ. आराम से पेशेंट होकर अपने आप को थोड़ा सा दें बेनिफिट ऑफ द डाउट कि अभी टाइम लगेगा. एंड वंस यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स एंड देयर इज नो गोइंग बैक, देन यू गोना बी सो एक्साइटेड. फाइनली इट डज पे ऑफ. ट्रस्ट मी, जो आज आप चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो वो थोड़े टाइम में बट वो दिखेंगी. आई प्रॉमिस यू. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कीप एट इट, कीप व्हाट यू आर डूइंग एंड you will see the results. अब मैं जाऊंगी अपने वर्कआउट पे. वर्कआउट की भी क्लिप्स आपसे शेयर कर लूँगी और शायद से पूछूंगी भी कि आज हम कौन सा वर्कआउट करें, ताकि मैं वो बता सकूं कि ये मेरा अपर बॉडी वर्कआउट था या लोअर बॉडी वर्कआउट था. सो आई विल शो यू गाइस माई वर्कआउट. Okay. Come on. Guys, I just got back up. Workout नहीं हो सका. I think the storm anxiety is now kicking in. नहीं कर पाई पूरा. Like I felt like I did not have the energy. लेकिन जो भी किया, still better than doing nothing. Don't forget to subscribe to my channel. Please, please, please. Love you guys. Take care of yourselves. Be safe. Bye.